last lectures we completed the concentration terms. We did numericals also. So these are going to keep. And today we are going to do solubility. Okay, we are moving on to solubility. Ultimately, solubility. So please write solubility of the substance. These things are like self-explanatory. Will not require much explanation here. Yeah, solubility of a substance is the amount of the amount amount of the amount that can be uh, dissolved in fixed amount of solvent at a given temperature. At a given temperature. Okay, and here I am trying to think. Assalamualaikum, am I audible? Walaikum Assalam, sir. Amna, is this your first class? Yes, sir. Spell out me, I think, in the trial class. You know? No. Yes, Amna. कल आपकी ट्रायल क्लास थी ना एक लिंक मिला होगा आपको राइट Yes, sir. तो आप ट्रायल क्लास में नहीं आए थे पहली बायो क्लास थी तो उसमें टाइम लग गया था. ठीक है समझ में आ जाएगा पुरानी चीजें एंड दोस व्हाटएवर यू हैव नॉट कवर्ड ना मतलब अभी जो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा तो सब कुछ समझ में आएगा इसकी बात नहीं solubility of a substance is the amount that can be dissolved in a fixed amount of solvent at a given temperature तो बेसिकली क्या बताता है कितना सॉल्यूट हम डाल सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ठीक है एंड व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ठीक है आप नेक्स्ट करेंगे लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग which also right now we'll be talking about solids and liquid है ना factors affecting solubility of solids and liquid write the first factor not the first factor write the topic factors affecting solubility of solids in liquids solids in liquids the number one है that is nature of solute and solvent nature of solute and solvent क्या मतलब है इसका प्लीज ध्यान दीजिएगा we all know in water if I add salt that will be much more soluble than sugar makes sense इसमें ऑब्वियसली salt will be much more soluble than sugar in what क्या ख्याल है राइट चलिए ये सुनो जल्दी बताएं which is more soluble salt or sugar which is more soluble salt or sugar so नहीं किसी को बताया क्या yes आमना इंशा खदीजा मरियम मरियम लोहानी सुहा which is more soluble salt or water salt or sugar I bet Salt. Okay. salt is more soluble so it depends on what yes Insha It depends on the solvent. Insha you are saying something I said sugar. sugar is more soluble
अच्छा ठीक है. If you're dissolving, if you put some salt in water, you don't have to even stir it, right? But if you want to mix sugar, you have to stir it for a very long time. अभी तो रमजान गया है, आपने रूह अफ़ज़ा बनाया होगा तो फिर उसमें चीनी डलती है. Yes, Imsha? You have to stir Yes. when you are adding sugar, right? है ना? So what is more soluble? Inside water, if I am keeping solvent as a constant, then obviously salt is more. So it depends on what, it depends on the solute also. Now, if I talk about salt in, let us suppose, water or oil, it will be more soluble in, if I am, and now I am keeping the solute constant, I'm going to use salt only, but I will change the solvent, water and oil, it will be more soluble in water. Okay? So Yes. that's the first part. Nature of solute and solute, है ना? Next is pressure. Second fact that we have to look is pressure. Pressure में क्या है? No effect. Why? No effect as solids are rigid. Solid क्या होता है? Rigid होते हैं. That is why कोई effect नहीं पड़ता pressure का. क्योंकि increasing the pressure then it does not affect the solid, and that is why it does not affect the solubility of solids also. पहले solid को affect करे तब तो solubility को affect करेगा. So pressure does not affect the solid. That is why it does not affect the solubility of solid. Third is temperature. Third is temperature. अब यहाँ ध्यान दीजिए. Like let us suppose if I have, now it depends on whether the dissolving process, the dissolution process, it is exothermic या endothermic. So let us suppose we ऐसे करते हैं. आपके पास कोई solute है, solute तो B से represent करता है ना, B से represent, है ना, and you are putting it in water or something, और ये हो जा रहा है B aqueous, and with this it is giving you heat. So dissolution process in this case we can say that delta H is what? Negative because heat is coming out. Makes sense? इसमें भी सही सही है. And if I have something which requires heat to get dissolved in water to become D aqueous, we'll say that delta H is positive. So the first one, it is what? It is exothermic, and this is endothermic process. दिखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा जरा. In the endothermic process, ध्यान दीजिए, if I increase the heat, solubility will also increase. क्या ख्याल है? By heat is, अब इस चीज को समझिए ना. Like when you add sugar and when you are stirring it, so why you are stirring it? When you stir it, what happens? The temperature increases not because of friction. ठीक है? So it becomes easier to dissolve. Why? Because adding sugar in water is an endothermic process. It requires a bit of heat. And that is why also, if you know how to make jalebis, you have to have that shira. अगर आपको शीरा पता है, that's sugar syrup. Sugar syrup. That sugar syrup, how it is made? You mix, you have water, you mix in sugar, then you heat it, and you keep mixing. Now, when you heat the water, you can mix a very large amount of sugar. That means if a process is endothermic, heating in that particular process, it increases the solubility. And उसी का उल्टा हो जाएगा इसमें in exothermic. In endothermic, what happens? When the temperature increases, the solubility will increase. Temperature increases and solubility also increases. But in exothermic process, what will happen? If the temperature increases and solubility will decrease. Now, this is somewhat related to, this is completely related to the Lee-Chapman principle that you have done in equilibrium. वहां पे क्या होता है? If you increase the amount of product, अगर product की amount increase कर रहे हैं, then what happens? Backward reaction होने लगता है, right? So in this case, if you see in the exothermic process, heat is also a product. And if you increase heat, that means if you increase the temperature, then this particular system will go in the backward direction. The solubility कम होती चली जाएगी. ठीक है? चलिए write this down. इसमें से किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, then please let me know. I will explain it.
Raise your hand if you're done. Raise your hand if you're done in practice of it. Waiting for Mariam Batul, Ravin Luthani, and Soha. Waiting for Mariam Batul and Soha. Just waiting for Mariam Batul. Mariam Batul, please let me know quickly if you're done. Or rather, Mariam, let me know if you're not done. Mariam, if you don't know how to raise hand, if you are using a laptop now, then Alt plus Y will raise your hand. अरे मरियम लोहानी आपका माइक ठीक हुआ? जी सर। अरे वाह, मुबारक, मुबारक। नेक्स्ट आपको फिर पढ़ना, दैट इज जनरल रूल ऑफ सॉलिड, है ना? दैट मींस व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड विल बी soluble in what type of solids. तो यहाँ पे देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल रूल ऑफ सॉलिड। ठीक है, नाउ पीपल आर लाइक 12th क्लास स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस, बट 11th क्लास में जो चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर वो हटा दिया गया, इस वजह से आपको शायद नहीं पता होगा, है ना? तो इसमें जो फंडा इस्तेमाल होता है, फंडा तो ये है लाइक डिसॉल्व लाइक, यू मे हियर दिस इन द स्कूल आल्सो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो मतलब क्या होता है इसका? if you have something polar, that will dissolve polar molecules or polar compounds. Polar dissolves polar, and non-polar dissolves non-polar. Non-polar dissolves non-polar. ठीक है, अच्छा, polar dissolve polar में ध्यान रखिए, it does not only mean that only polar molecules. Even if you have ions ना, जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, NaCl is an extreme case of polarity because Na is having complete positive charge and Cl is having a complete negative charge. और वहीं अगर आप बात करेंगे HCl की, then HCl is also polar because why? Because it is having delta positive and it is having delta negative. Now, inside even polar compounds, there are certain factors. For example, hydrogen bonding will be given higher preference rather than normal polar molecules. ठीक है, ये तो फंडा सबसे पहले कह रहा है, पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। अब पोलर डिसॉल्व पोलर में एक सिर्फ सब कैटेगरी बनती है ना, दैट इज रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, मतलब चलिए ठीक है, उसको ना दिखाते नहीं बिकॉज इट इज नॉट लाइक a रूल। इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद देयर आर 3 क्वेश्चन दैट आई विल डिस्कस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दैट विल मोस्ट ऑफ लाइक क्लियर थिंग्स आउट। कुछ तो आपको डाउट रहेगा बिकॉज यू हैव नॉट इन स्टेट्स ऑफ मैटर, सो यू डोंट रियली नो हाउ टू आइडेंटिफाई, लाइक कुछ तो पता होगा आपको कि पोलर और नॉन पोलर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, बट उतनी आपको कमांड नहीं होगी बिकॉज ऑफ दैट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इतना लिख लीजिए जल्दी से, एंड देन यू विल डू 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। ज्यादा टाइम नहीं वेट करेंगे हम। डोंट रेज योर हैंड, just let me know yes sir, no sir, done, then I will move on. अगर बोल दीजिए आप डन 3 लाइन, 2-3 लोगों का हो जाएगा तो हम उसको भी कर देंगे। ठीक है, मरीम बतूल का हो गया, वेटिंग फॉर अदर्स, आमना, इंशा, फरिया। डन गाइस, anyone still writing? Yes sir बोलिए if you're writing. No one is writing, पक्का हो गया? Is it yes sir बोलो, माइक ऑन करके बोलो if you're writing. No one is writing, ठीक है। घबराइए मत, 3 साल है, घबराइए मत। सोहा, you're done ना सोहा? सोहा, are you done? ठीक। Such is the most important intermolecular attractive interaction between the following pairs, है ना? तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज समथिंग व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव
इंटरैक्शन, ये मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यू हैव नॉट रियली लर्न इन 11th स्टैंडर्ड, है ना। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आपके पास एन हेक्सेन है, एन ऑक्टेन, राइट। तो व्हाट इज एन हेक्सेन? 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टेन विल बी 1 2 7 नहीं होगा, 5 2 7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, अच्छा ऑल ऑफ यू नो ना, ये तो पता होगा सबको, दीज आर कार्बन एटम्स, ठीक। नाउ देयर इज नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन। ये दोनों के दोनों क्या है? दीज आर नॉन पोलर, है ना। दोनों के दोनों क्या है? ये बोथ आर व्हाट? बोथ आर नॉन पोलर। दोनों क्या है? नॉन पोलर। And in non-polar molecules, there is a force of attraction. That's जिसे क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, I2 and CCl4 again, both of these are again what? Non-polar, because I2 में देखिए iodine is bonded to iodine, so there is no electronegativity difference between the two iodine. दोनों iodine the same electronegativity होगा, so this will be what? Non-polar. And here also you will be having van der Waals को VDW लिख देते हैं, force of attraction, ठीक। Then you have NaClO4. Now NaClO4 क्या होगा? Na positive and you will be having ClO4 negative, ठीक है। और वाटर में क्या होगा? वाटर will be HOH, fine. So here you will be having polar interaction, है ना। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, डाइपोल, these are what? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मिथेनॉल और एसीटोन की बात करें हम, तो व्हाट इज मिथेनॉल? CH3OH, है ना। और एसीटोन क्या होता है? टू कार्बन एटम्स और बीच वाले में डबल बॉन्ड होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, and here also CH3. Now, in this, if you see, there will be hydrogen bonding. Why there will be hydrogen bonding? मैं आपको देखिए, और see, these are not really required, है ना। ऐसा नहीं बिल्कुल आपकी इस तरह से सवाल आते नहीं है, लेकिन तो जान लीजिए तो अच्छा है आपके लिए, बिकॉज इजी सवाल है, ठीक है। Here you are having CH3, then you are having oxygen, then you are having hydrogen, ठीक है। This hydrogen is bonded to oxygen, that's why there will be a highly delta positive charge, and this oxygen it is having both pair electrons. यहाँ पे क्या होगा? There will be hydrogen bonding between these two atoms, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। एसीटोनाइट्राइल विल बी कुछ इस तरह से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, एंड हियर विल बी हैविंग एसीटोन से वही डबल बॉन्ड हो। तो दिस इज आल्सो व्हाट? दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड दिस विल बी डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। दीज आर व्हाट? पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या होगा? वही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। एक ही होगा, ठीक है। सो वंस यू नाउ व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो कि कौन पोलर है कौन पोलर नहीं है ना। और इफ यू आर हैविंग पोलर, देन उसमें क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड इफ इट समथिंग इज नॉन पोलर, उसमें क्या होता है? उसमें होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैटर नहीं करेगा, क्या करेगा? मैटर मैटर करेगा आपके पास व्हाट इज द व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ना पोलर है नॉन पोलर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, arrange the following in order of increasing order in n octane। n octane में कौन ज्यादा soluble होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा, n octane जो है आपका नॉन पोलर, ठीक है। इसमें जो ज्यादा नॉन पोलर होगा वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, सही है। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन में देखिए, साइक्लोहेक्सेन इज लाइक दिस, देयर इज नो पोलैरिटी। ये भी क्या है? नॉन पोलर। अच्छा, KCl क्या है? KCl तो आयन है, कंप्लीटली पोलर। CH3OH, CH3OH क्या है आपके पास? दिस इज, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास? CH3Cl, CH3Cl क्या है आपके पास? CH3Cl इज पोलर, CH3Cl इज पोलर, ठीक है। ये काम कीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, 2.23 वाला कॉपी कर लीजिए, उसको सेंसर समझाते हैं।
वाटर में ना मतलब यू कैन आल्सो राइट आयन डाइपोल इंटरेक्शन लिख सकते हैं, डाइपोल डाइपोल के बजाय, ठीक है। बट आयन इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ डाइपोल, आप उस तरह से समझ सकते हैं आयन आयंस को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंप्लीट, पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव। राइटिंग का इंटरेक्शन, सारा सवाल ये कि आप लोगों को बस लिख दीजिए ये चीज़। बाय द वे, जो कंप्लीट एनसीईआरटी इस तक कोई थ्योरी है ही नहीं। सवाल ये तीन सवाल है ना, देयर इज नो थ्योरी दैट यू कैन रेफर एनसीईआरटी टेक्स्ट, ठीक है। दैट इज व्हाई द कंप्लीट एनसीईआरटी इज नेसेसरी। एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो तो पढ़ना ही है आपको। यू हैव टू डू आल्सो एक्सरसाइजेस, दैट एक्सरसाइजेस विल टेल यू समथिंग अबाउट ये अच्छा थ्योरी में वो नहीं हो, 11th क्लास का सिलेबस है उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट एवरीवन यस और नो प्लीज टेल मी, सबका हो गया? एनीवन स्टिल राइटिंग? एनीवन स्टिल राइटिंग? नो वन इज राइटिंग, ठीक है। Pratik, are you writing, Mariam? No, no, I'm not writing. I said no. देखिए आवाज नहीं आती है तो प्लीज स्पेस बार मत यूज कीजिए आप मेरा, अच्छे से माइक ऑन कीजिए। हम रिप्लाई करेंगे आप लोगों को, तब तक आप माइक ऑन करके रखिएगा, ठीक है ना। इफ यू से नो सर से ओके, ठीक है, तब तक कम से कम आपको माइक ऑन करके रखिए। अभी मरियम बोली थी, किसी को आवाज आया था अभी? आमना, डिड यू हियर एनीथिंग? नो सर। ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं आती कभी कभी, ध्यान देखिए, ठीक है, ध्यान देखिए यहाँ पे आपके पास। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ आपने कहा नो लेकिन आवाज नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो स्पेस बार दबा के मत बात कीजिएगा, टर्न द माइक ऑन कंप्लीटली, ठीक है। ठीक है, एन ऑक्टेव में एंड इट इज व्हाट, नॉन पोलर, है ना। तो नॉन पोलर इसको डिजाइन इसमें हम ये मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं आयन वाले को। ये केसीएल था, ये आपके पास सी है CH3OH और ये बी है आपके पास। तो नॉन पोलर किसको सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा? नॉन पोलर को, ए को सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा। उसके बाद किसको करेगा? जो थोड़ा सा पोलर है, थोड़ा सा पोलर कौन है? CH3, दैट इज बी। उसके बाद किसको डिसॉल्व करेगा? विच इज पोलर लेकिन थोड़ा ज्यादा पोलर है ना, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, दैट इज सी। एंड इट विल नॉट डिसॉल्व व्हाट, विच इज आयन। आयन को नहीं डिसॉल्व कर पाएगा बिकॉज आयन इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉट पोलैरिटी, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पोलैरिटी, तो बी सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। नो नीड टू बी सॉरी मरियम, फाइन, ठीक है। तो पोलर वन डिसॉल्व, पोलर को सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा, उसके बाद किस करेगा? जो थोड़ा कम पोलर हो, बाय बाय, दिस इज नॉन डिसॉल्व नॉन पोलर, है ना। उसके बाद किसको डिसॉल्व करेगा? जो थोड़ा पोलर हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्सट्रीम केस ऑफ पोलैरिटी, और उससे भी एक्सट्रीम क्या होता है? कंप्लीट पोलैरिटी, दैट इज एन आयन। तो सबसे ज्यादा पोलर होगा उसको सबसे कम डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ठीक है। प्लीज राइट डाउन इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, ये आप लोग समझिएगा, ये समझिए होमवर्क है ना। तो वाटर क्या होता है हम आपको बता देते हैं। वाटर होता है, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले को करेगा या फिर आयंस को करेगा, ठीक है। पोलर वाले को कम करेगा, पार्शियली करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में तीन केस बन जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में आपके पास होगा इनसॉल्युबल कौन होगा? इफ यू आर एडिंग पोलर, तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। पोलर से इनसॉल्युबल होगा यार, माय बैड, माय बैड। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर एडिंग नॉन पोलर, देयर इट विल बी इनसॉल्युबल,
ठीक है, if you're adding cooler, it will be partially soluble. पानी के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है? पानी में होता है, partially soluble, ठीक है ना, partially soluble. बट केसेस if you're adding एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, it will be completely soluble. ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई आपने चीज ऐसी डाली जो आयन, ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, बिकॉज एक एक्सट्रीम केस ऑफ क्या है, पोलैरिटी है. कॉपी दिस डाउन. नोट्स में कहीं पे बस लिख लीजिए, ऐसा सवाल वाल आता नहीं है इसलिए, ठीक है. सोल्यूशन चैप्टर किसके किसके स्कूल में हो चुका और टेस्ट भी हो चुका है? आमना, आर यू डन विद सोल्यूशन चैप्टर इन स्कूल? आमना, यस सर। वाज ये कराया गया था? दिस पार्ट व्हाट वाज सर? डन इन स्कूल? वाज दिस पार्ट डन इन स्कूल? इस तरह का कुछ पढ़ाया गया था स्कूल में? मैं इंडिया में थी तो मुझे नहीं पता इतना। इंशा, व्हाट अबाउट यू? डिड यू डू दिस टॉपिक इन स्कूल, इंशा? We completed this chapter, but even I missed the beginning explanation in school. खदीजा, व्हाट अबाउट यू? खदीजा तो शांत नहीं, किसी को बोलेंगे नहीं खदीजा तो. ठीक है, मरियम बतूल, व्हाट अबाउट यू? वाज दिस टॉपिक No, डन इन sir. स्कूल? No, sir. Such नहीं, questions were not taught here. ठीक है, वो नहीं करते हैं जनरली, डिस्कस भी नहीं करते, आदत नहीं है. मरियम रुहानी, व्हाट अबाउट यू? No, sir. आपके ये नहीं स्कूल में डिस्कस पढ़ाया किया गया था। था सर? नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है, तो बस इसको नोट्स में रखिएगा. आपने पढ़ लिया, भूल जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं. ज्यादा लोग है ना इस टॉपिक पे. आई नो दैट इसमें बच्चे उतना कंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज दे रियली डोंट नो कि फिनॉल क्या होगा, टॉलुइन के स्ट्रक्चर भी आपको नहीं पता होगा, फॉर्मिक एसिड भी नहीं पता होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल भी नहीं पता होगा, क्लोरोफॉर्म भी नहीं पता होगा. ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं है ना. एक बार समझ लिया, बस याद क्या रखना है आपको, लाइक डिजॉल्व. क्या ध्यान रखना है? लाइक डिजॉल्व, ठीक है ना. हम लोग आगे बढ़ते हैं. आई होप ये 25 नंबर वाला इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना. एक बार हम लोग जब अगले के उसके में आएंगे तब धीरे धीरे आपको चीज समझ आएगी. तो हमने एक डिस्कस कर लेना था, हम आगे बढ़ते हैं. देन एवरीवन टेलिंग एरिया सॉल्व प्लीज टेल मी. सबका हो गया? Done, sir. सबका डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या टॉपिक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas and liquid. Gas and liquid. Number one, nature of gas. Nature of gas and liquid. ये वही हो गया, है ना. सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा. ठीक है. सेकंड, इसको आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है ना. कुछ गैस होंगी जो ज्यादा डिसॉल्व करेंगे, कुछ गैस में कम डिसॉल्व. इस टाइप के पास टेम्परेचर. ठीक है, ध्यान रखिए जरा. टेम्परेचर इस केस में क्या होगा ना, सॉलिबिलिटी होगी. सॉलिबिलिटी किसकी? गैस की. सॉलिबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना. Because what will happen if you increase the temperature, the gas molecule they will escape out. बात समझ में आ रही है? Make sense? Yes or no? Second point, temperature वाला. Yes, sir. ठीक है. So when you are heating something, then what will happen? This gas will escape out. तो कम soluble रहेगा. ठीक है. Therefore, now this is a wide type of question that has been asked many times in the examination. Therefore, aquatic animals. Therefore, aquatic animals are more comfortable in dash water. डैश में आपको फिल करना है, ये मत लिखिएगा नीचे जो हम लिखते हैं, वार्म या कोल्ड. कहाँ ज्यादा प्रेफर करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स? कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, वार्म में या कोल्ड में? Cold. कोल्ड में. क्यों बताएगा कोई रीजन बताइए, वाई कोल्ड? Because if temperature increases, then solubility will decrease. Solubility of Solubility The oxygen. किसका? oxygen is more soluble in water when the temperature decrease. इज लो, है ना. ठीक है ना.
इट विल बी मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, बस ये आंसर करना आप। इसमें ध्यान रहे ये चीज आने, लाइक व्हेन दे विल आस्क लाइक दिस, व्हाई आर एक्वाटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर, देन यू विल से। अब यहाँ पे जो हमने सॉलिबिलिटी लिखा है, इन जनरल फॉर गैस, आप यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे, बस सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, इनवर्सली का साइन 1 अपॉन टेंपरेचर, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन 1 अपॉन टेंपरेचर, देयरफॉर एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है ना, तो ये चीज आनी जरूरी है दिस वीक, दिस इज द मेन रीजन है ना। यही चीज आपने पढ़ी है कहाँ, 11th स्टैंडर्ड, सॉरी ये चीज आपने पढ़ी है 12th स्टैंडर्ड। तो व्हाटएवर यू हैव स्टडीड दैट इज इंपॉर्टेंट टू राइट, फाइन। ऐसा मत लिख दीजिएगा इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस, बताइए aquatic animals are more comfortable in cold water because there is more oxygen। बात सही है हाँ या ना, कोल्ड वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन होगा, बात सही है, करेक्ट है, यस। हाँ या ना बोलिए। लेकिन क्या आपको हाँ। मार्क्स मिलेगा अगर ऐसा लिखेंगे तो, मार्क्स मिलेगा नहीं। नहीं, आंसर सही है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इससे ये मतलब नहीं है कि टीचर चाहते हैं कि टीचर ने जो लिखाया वही लिखना है, वो नहीं चाहते। टीचर चाहते हैं आपने जो सीखा है इस साल, कि सॉलिबिलिटी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, वो लिखना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जहाँ पे वेरी यस। केयरफुल, 11th में आप लोगों के साथ ये चीजें हुई होंगी कि आपने आंसर लिखा होगा, दैट आंसर इज लॉजिकली फाइन, बट मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आपको बिकॉज जो टीचर चाहता लिखना है, यानी जो चीज आपने सीखी है 11th में, व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन द 11th स्टैंडर्ड, दैट यू हैव नॉट लर्नड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज प्रेशर। थर्ड इज प्रेशर, क्या है इसमें, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्यों, बिकॉज गैस है, आप प्रेशर डालेंगे तो गैस चल जाएगा एंड इट विल बी मोर सॉल्युबल। ठीक है, तो यू विल फाइंड the solubility of gas, the solubility of gas at a given temperature, at a given temperature is directly proportional, is directly proportional to the pressure at which it is added, at which it is added। ठीक है, everyone yes no be seen, हो गया। तो guys are writing with me, waiting for Amna, Khadija, Maryam, Abdul। So लास्ट में कोई चला गया लग रहा है कुछ। खदीजा will you speak today, क्या क्या इरादा है आज मौन व्रत। मौन व्रत पे इरादा खदीजा का, क्या waiting for Insha and Khadija। खदीजा का हो गया ना, Insha just waiting for you, keep your No, hand I raised by your completed. turn, okay। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, but keep your hand raised, ठीक है सब ओके ठीक है। Okay, okay. Write the next topic and we will topic and we will। हम तो भूल जाते हैं ना, आप लोग का हाथ देखना हमें आपने रेस करता है, हम भूल गए, सबका हाथ रेस हो जाता है फिर हम हाथ छोड़ देते हैं। ठीक है, व्हाट इज हेनरीज नाउ, राइट हियर, पार्शियल प्रेशर of a gas in vapor phase is directly proportional, is directly proportional to the mole fraction of gas in solution, gas in solution। ठीक है, तो बेसिकली इनका क्या कहना है, जो partial pressure of gas is directly proportional to pi b, and when you remove the proportionality sign
एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम नाम दिया pH इनटू टाइम, ठीक है। धीरे करो कि हेनरीज लॉ आया कहां से, बहुत लॉजिकल है इसको समझना, लिखने की अभी हाथ पेश करने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हेनरीज लॉ आया कहां से। लेट अस सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, एक आपके पास इस तरह का कोई कंटेनर है एंड यू हैव वाटर, ठीक है, आपके पास वाटर एंड यू हैव एडेड सम गैस, ठीक है, आपने कुछ क्या याद आ रहा है इसमें, गैस डाला है ना, एंड होपफुली यू नो दैट गैस कैन बी एडेड बिकॉज कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो आप पीते ही होंगे, ठीक है। नाउ वाटर कैन evaporate, करेक्ट है आया ना? आई नीड समवन टू से जस्ट यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। Water can evaporate, है ना? Keep your mic on if somebody is answering. Water can evaporate, ठीक है। What will happen? Some water molecules will be there just above the solution. Now gas can also escape because gas की तो मतलब यही है ना, it is a property of gas that is moving very fast. So whatever gas you have added in the solution के नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा, निकल जाएगा बाहर, कैसे? Like for example, when you open the seal of a cold drink, then the CO2 comes out, na? Make sense, yes or no, please tell me. Gas can also escape out, बताइए। Yes, नहीं, sir. ठीक है। अच्छा, विच हैज मोर एस्केपिंग टेंडेंसी, पानी ज्यादा escape करेगा या गैस ज्यादा बाहर जल्दी escape करेगा? विच हैज मोर एस्केपिंग टेंडेंसी, गैस का या लिक्विड का, किसका ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होगा? Gas. Yes. Gas, है ना? It will be very, I mean, the escaping tendency of gas will be much higher than that of water, ना? Because gas है, उसमें कोई there is no force of attraction that is holding the gas back, so that is why आपके पास यहाँ जो वेपर्स है ना, these vapors are of water as well as gas, but the vapors of gas will be much higher than that of water, and that is why what देखिए जो गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है ना, बिकॉज गैस इज सॉल्यूट, वी विल कॉल दैट पीपी, एंड वाटर की वजह से जो प्रेशर आता है उसको क्या बोलेंगे, पीए बोलेंगे, ठीक है ना, बिकॉज गैस it will exert pressure, water vapors it will also exert pressure, and this pp is very much greater than a, इतना ज्यादा होगा कि pa को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो द टोटल प्रेशर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट एवर द प्रेशर ऑफ गैस, वॉट एवर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ गैस, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द will be almost equal to the pressure that is above the solution, ठीक। इसी वजह से यहाँ पे वर्ड है पार्शियल प्रेशर, लेकिन हम लोग लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ, द प्रेशर दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मतलब द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है, द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय गैस, लेकिन यहाँ पे टोटल प्रेशर ही वही है, बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इट इज गोइंग टू बी सो लेस, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का एक्चुअली मदीन बतूल ने एक बार पूछा था कि सर ये पार्शियल प्रेशर और प्रेशर में कोई डिफरेंस है क्या, तो देखिए कोई कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है। पार्शियल प्रेशर मतलब हुआ प्रेशर ड्यू टू द गैसेस मॉलिक्यूल्स, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टोटल प्रेशर ले रहे हैं भाई, बिकॉज जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, दैट इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑन द प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, ठीक है। बट मरी मतलब यू गॉट दिस, सुनो, Yes, sir. I understood now. ठीक है। अच्छा चलिए, अब उसके बाद देखते हैं क्या है pH हेनरीज कांस्टेंट क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज दिस हेनरीज कांस्टेंट, आई होप यू आर राइट, प्लीज राइट दिस डाउन इफ यू हैव नॉट रिटन, एंड राइट द टॉपिक हेनरीज कांस्टेंट, इसको समझते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। इफ यू आर नॉट रिटन प्लीज राइट इट डाउन, टॉपिक डाल लीजिएगा हेनरीज कांस्टेंट एंड उसके बाद हम विल स्टार्ट। Raise your hand if you're done. Waiting for Insha and Khadija. Just waiting for Khadija.
फर्स्ट वन, pH जो है, it depends on the gas. Different gases will have different value of pH. ठीक है, सबसे पहली चीज pH किस पे डिपेंड करेगा? गैस पे डिपेंड करेगा. pH depends on gas. Different gases have different value of pH. Different value of pH. ठीक है, तो हम इसको ध्यान देते हैं pH के बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, ध्यान दीजिए. If I am going to increase the pH, the pressure will also increase. ये सुनो, pH बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा. बोलिए गाइस, ये सुनो. यार Yes. आप तो जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं समझ में आ रही चीजें क्या? बताइएगा ना आप लोग. इस तरह कैसे चलेगी क्लास? हम सिर्फ बोलते रहे क्या? ठीक है, ध्यान दीजिए जरा. आपके पास दो गैसेस हैं, एक का केएच कम है, एक का केएच ज्यादा है. ठीक है, तो अगर केएच ज्यादा होगा, ठीक है, ए के लिए और ये बी के लिए, तो प्रेशर भी किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा बी से. मेक सेंस? बी सही है. बोलो भाई. Yes. Yes, sir. अरे लिख रहे हैं क्या आप लोग? यार बोलिए ना, प्लीज बोलिए. ठीक है ना, अगर प्रेशर ज्यादा है दैट मींस देयर विल बी मोर वेपर्स ऑफ ए. मतलब ए गैस का ज्यादा वेपर होगा कंपेयर टू बी गैस. सही है, हाँ या ना? Yes. यस. इफ देयर आर मोर वेपर्स, अगर ज्यादा वेपर्स है वहां पे, यानी कि द गैस ए वो ज्यादा एस्केप कर रहा है. I can say the escaping tendency of gas A is greater than the escaping tendency of gas B. Now, gas A escape क्यों कर रहा है? That can only happen if the gas A does not want to get dissolved. अगर वो dissolve होना चाहता, then it would have stayed in the solution. But since it is escaping, you can see that it does not want to be dissolved inside the solution. And hence we can see if something is not willing to get dissolved, उसकी solubility क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इनिशियली आपके पास क्या है? वी कैन देन फर्दर से दिस सॉल्युबिलिटी इज लेस देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ बी. जो ज्यादा एस्केप कर रहा है वो सॉल्यूशन में नहीं रहना चाह रहा. इफ इट डज नॉट वांट टू स्टे इन द सॉल्यूशन, दैट मींस सॉल्युबिलिटी इज लो. तो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आप लोग पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखिएगा. इफ pH is higher, solubility is lower. And pH बता क्या रहा है आपको? pH tells about the escaping tendency of gas. Escaping tendency ज्यादा होगी, solubility obviously लो हो जाएगी. मेक सेंस? टिल हियर? ये सुनो प्लीज. नहीं, Yes. ठीक है, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं. ये लॉजिक आपको दिमाग में रहना चाहिए. ये लॉजिक शुड बी देयर इन योर ब्रेन. ठीक है, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस स्टेटमेंट. इफ pH इज हाईएस्ट, सॉल्युबिलिटी इज लोअर. नेक्स्ट पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होगी? यू नो दैट P it is equal to pH into chi b. Chi b is the mole fraction of the solute, and we can so write pH will be equal to pressure upon chi b. What are the units of pressure? प्रेशर के आपके बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं. आपके पास या तो हो सकता है एटीएम, या फिर हो सकता है बार, या फिर हो सकता है पास्कल. है. व्हाट अबाउट मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, बिकॉज मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स. न्यूमरेटर में भी मोल्स, डिनोमिनेटर में भी मोल्स, तो मोल्स मोल्स कैंसिल, इट इज यूनिटलेस. दैट मींस एच की जो यूनिट होगी, द यूनिट ऑफ एच विल बी द यूनिट्स ऑफ प्रेशर इटसेल्फ. है. यू कैन राइट यूनिट ऑफ एच इज इक्वल टू, या तो एटीएम होगा, या तो बार होगा, या तो पास्कल होगा, या तो mm of hg. This is also pressure unit.
ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, we are- अभी भी हम लोग कहाँ पे, गैस इनसाइड लिक्विड, है ना? when the temperature increases we have seen that the solubility decreases, solubility decreases। अच्छा, एक और चीज हम लोगों ने देखा है, क्या देखा हम लोगों ने, अगर pH बढ़ता है तब भी क्या होता है, जब pH बढ़ता है तब भी solubility घटती है। तो इन दोनों से हम लोग ये बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि pH जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी घट रही है, pH के बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी घट रही है। दैट मींस टेम्परेचर बढ़ने से pH क्या होगा, बढ़ जाएगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना। बेसिकली तो ये लिखा है हमने, pH will support the escaping tendency। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सेंस क्लियर है समझी चलनी, बात समझ में आई यहाँ तक? Yes. Copy this down, raise your hand once you're done। Video from Mariam Ratul and Mariam Mahani। Shobha got distracted, no? Oh, Shobha नहीं था, चलिए ठीक है, सब लोग ने पहले दो सवाल की भी। The pH value of argon, carbon dioxide, HCHO, and CH4 are इतना। Arrange these gases in the order of their increasing solubility। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा। First of all, what I will do now? First of all, I will number these things। इसको हम A मान लेते हैं, CO2 को B मान लेते हैं, HCHO को C मान लेते हैं, और CH4 को D मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका क्या दिया हुआ है, pH वैल्यू इसके बाद। ठीक है, तो जो दिया हो देखिए, अरेंजिंग ऑर्डर जो होता है उसमें आपको हमेशा ऐसे ही करना है, जो दिया है उसको पहले अरेंज कर लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में लीजिए, आंसर आ जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे क्या यूज किया हुआ, साइन यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच, यहीं से भी चेक लीजिए। 40.39 सबसे बड़ा है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 40.39 इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी। ठीक है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, समझने की कोशिश कीजिए अभी आप। ठीक है। अच्छा, 40.39 के बाद क्या आएगा, वी हैव 1.67, 1.83 इंटू 10 टू द पावर -5 है, उसके बाद 0.413 है। सो ऑब्वियसली 1.67 विल कम नेक्स्ट, 1.67। ठीक है, और 1.67 के बाद क्या आएगा, 0.413, एंड उसके बाद सबसे कम किसका हो जाएगा, 1.83 इंटू 10 टू द पावर -5, बिकॉज इट इज -5। तो आप जान रहे हैं क्या होगा, मतलब 0.00 करके आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। बाय द वे 40.39 था किसका एबीसीडी में से, इट वाज फॉर ए, और 1.67 किसका था, ए, और 1.67 किसका था, बी का, 0.43 था डी का, है ना, और ये सी का। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ पीएच। और हमको पता है पीएच जो होता है, सॉलिबिलिटी जो होती है, सॉलिबिलिटी पूछा ना, सॉलिबिलिटी और पीएच का रिलेशन क्या है, सॉलिबिलिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। तो जो पीएच का ऑर्डर होगा उसके उल्टा किसका ऑर्डर हो जाएगा, सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, ए का सबसे कम, उसके बाद बी, उसके बाद डी, और सबसे ज्यादा C। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है इस तरह के सवाल को। आपको किसी एक चीज की वैल्यू दी रहेगी, किसी दूसरी चीज का अरेंज तो बोला रहेगा कि अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वट एवर वैल्यू हैज बीन गिवन उसको आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जैसे भी ऑर्डर में आपको कंफर्टेबल लगता है वो कर लीजिए। देन जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसका रिलेशन लिख लीजिए। अगर डायरेक्ट रिलेशन हुआ तो जो दिया गया है और जो पूछा गया है दोनों का सेम ऑर्डर आ जाएगा। अगर इनवर्स रिलेशन दिया है तो जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसका उल्टा रिलेशन, उसका उल्टा हो जाएगा, जो दिया गया है उसका ऑर्डर और जो पूछा गया है उसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मेक सेंस है, चलो फंडा समझ में आ रहा है कैसे करना है। मरियम, आमना, इंशा, फरीजा। यस सर। ठीक है, कॉपी कीजिए, समझ समझ के कॉपी कीजिएगा, है ना? प्लीज इस तरह से मत भटकिएगा आप लोग एग्जाम्स के टाइम। सबसे ज्यादा 40 तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, ज्यादा होगा कम होगा,
कहाँ हो रहा है? अच्छा ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन, लेकिन ये डी में भी है आर्गन आर्गन। अब उसमें CO2 देखना, CO2 यहाँ पे है, CO2 का 1। ठीक है, तो ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे ऑप्शन के साथ मत खेलिएगा कभी भी, ठीक है ना। whenever you are having this type of question, आराम से what you will do, you will write all the values in increasing and decreasing order। ठीक है, find the relationship between what is given and what is asked। ठीक, और जो पूछा गया है if it is direct, जो given है वो ऑर्डर, जो पूछा गया है उसमें मिल जाएगा। if the relationship is inversely proportional, then जो दिया गया है उसका order और जो पूछा गया है उसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना। बाय द वे आंसर क्या होगा इसमें? आंसर कौन सा होगा? सी होगा आई गेस ना। आर्गन, ये क्या था आपके पास? आर्गन था, बी क्या था आपके पास? CO2 है ना, तो ये हो जाएगा। हाँ, एक और चीज कीजिएगा, हमेशा ना ABCD कर दीजिएगा, तो बार बार आपको ना मतलब कितना बड़ा आर्गन CO2 HCO ना लिखना पड़े। ठीक है, नेविगेट करने में आसानी हो जाती है। डन टेल हियर, यस और नो प्लीज टेल मी। If you're done, please raise your hand. Waiting for Khadija and Mariam Batul. वैसे ये एग्जाम्पलर का सवाल है, NCERT के लिए एग्जाम्पलर एक किताब आती है, प्लीज बाय दिस बुक ऑल्सो, है ना। एग्जाम्पलर NCERT की होती है ना, उसको प्लीज खरीद लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 के बाद। नेक्स्ट है आपका सवाल, लिखिएगा फिर। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी, कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 in water at 298 Kelvin under 760 mm Hg। ठीक है, pH दिया हुआ है for CO2, it is equal to 1.25 into 10 to the power 6 mmHg। फाइन, कैसे करना है सवाल? अच्छा, यहाँ पे ना पूछा बहुत अजीब चीज है, सॉलिबिलिटी पूछ लिया यहाँ पे है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं सर। सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी ऐसे तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है सॉलिबिलिटी निकालने का। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी टेल्स यू अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट यू कैन ऐड इन अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो बेसिकली कंसंट्रेशन ही हो गया। नाउ कंसंट्रेशन कैन बी रिटन इन मेनी टाइम, आप मोल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, मोलारिटी, बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या है, यू हैव CO2 which is gas inside water। तो जब भी आपके पास गैस इन लिक्विड आ जाए तो हेनरीज लॉ लगेगा। यू हैव P इज इक्वल टू KH इनटू काई। इसमें दिक्कत क्या आती है ना, लाइक नथिंग इन द हेनरीज लॉ टॉक्स अबाउट सॉलिबिलिटी। वो इस वजह से बच्चों को नहीं दिख रहा सॉलिबिलिटी, बिकॉज देन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ कि मोल फ्रैक्शन आल्सो टेल्स अबाउट सॉलिबिलिटी। कंसंट्रेशन ही तो बताता है सॉलिबिलिटी, है ना। तो क्या निकालना आपको? काई भी निकालना है। काई भी विल बी इक्वल टू KH अपॉन P, नहीं P अपॉन KH, P अपॉन KH। So what is the pressure? Pressure is 760, है ना, divide by KH is what, 1.25, and 10 to the power 6, if it will go above, it will become 10 to the power minus 6। सही है ना। तो 1.25 into 760 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? तो कैलकुलेट कीजिए आप, तो 1.25 कैलकुलेट फ्रैक्शंस में I calculated 600 के आसपास आ जाना चाहिए, आई थिंक आंसर। 125 into 6 करके देखते हैं, अगर वही वैल्यू आ जाएगी तो ठीक है। 5 6 30, 6 2 12, 13 14 15, है ना। सॉरी 7, तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ गया, है ना। तो 600 के करीब कुछ आंसर आएगा। एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। Will be ये 608 आ रहा है, दिस डिवीजन है 608 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, सो दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन। टाइप बी कितना हो जाएगा? टाइप बी, इफ आई वांट टू राइट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन, दैट विल बी 6.08 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, ये है ना, 2 डेसिमल पॉइंट। कॉपी कर लीजिए इसको।
Raise your hand once you're done. Waiting for Marie Matul. नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग ग्राफ फॉर मेमोरीज का। ग्राफ फॉर मेमोरीज, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग ग्राफ एक चीज ध्यान रखिए, ईच एंड एवरी ग्राफ इज मेड बाय अ पर्टिकुलर इक्वेशन। एक इक्वेशन होगा, उसी से आप ग्राफ बना सकते हैं। जो पहला ग्राफ बनेगा दैट इज पी इट इज इक्वल टू एच इंटू टाइम, ठीक है। हाँ, ये आपके पास y इज इक्वल टू mx टाइप ऑफ ग्राफ है दैट विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो ग्राफ्स का आइडिया है सबको ना, होपफुली आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो फिर ना यू जस्ट वॉच सम लेक्चर्स, या फिर एक, अगर मैथ्स के आप लोग हैं तो फिर एक बहुत अच्छी किताब आती है प्लेइंग विद ग्राफ्स। छोटी सी बुकलेट है ये प्लेइंग विद ग्राफ्स, एंड बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया रहता है सब कुछ, ठीक है। तो इफ यू आर मैथ स्टूडेंट तो ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है। बायो के स्टूडेंट है तभी फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, प्लेइंग विद ग्राफ्स ले लीजिए। तो y इज इक्वल टू mx कहाँ से जाएगा, इट विल बी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। एंड अच्छा बाय द वे ये एक्सिस हमने डिफाइन नहीं किया, तो पहले हमको एक्सिस डिफाइन करना चाहिए था, डिफाइन दी एक्सिस। चलो कुछ और दे देते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रेशर है, एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ऐसे देख रहे हो, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ऐड मोर गैस, फिर मोर गैस विल आल्सो एस्केप आउट, तो ज्यादा प्रेशर वहां पर कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बाय द वे इन दिस ग्राफ वी कैन आस्क यू द स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी kh, ठीक है। And we know from concentration terms that chi A plus chi B is equal to 1. Chi A plus chi B is equal to 1. उसी वजह से I can rewrite this equation as P it is equal to KH into 1 minus chi A. है ना भाई, because chi A plus chi B it is equal to 1. So chi B will be equal to 1 minus chi A. ठीक है, तो ऐसे भी इक्वेशन को लिखा जा सकता है। एंड फॉर दिस द ग्राफ, पहले इस इक्वेशन को और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। KH को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लीज डोंट वरी, आई विल शो यू द ग्राफ वंस अगेन। पहले समझ लीजिए KH माइनस KH इंटू काई, और यहाँ पे क्या है प्रेशर। ये जो ग्राफ है दिस इज अप्रोक्सीमेटली लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c की तरह, है ना। देखिए आप, ये आपके पास y है एंड दिस इज योर x। x के साथ जो होता है उसको m बोला जाता है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट, दिस विल बी c, ठीक है। अब देखिए जरा ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर, और यहाँ पे हम करेंगे काई, है ना। Here will be doing काई। Now the slope will be something like this. Slope, or sorry, the graph will be something like this. Right? और यहाँ पे जो आपके पास स्लोप आएगा इस ग्राफ का, that will be minus kh, है ना। m क्या होगा इसका, minus kh, ठीक है। होपफुली प्लीज नोट दिस डाउन, अगर समझ में नहीं आया हो कोई ग्राफ तो फिर उससे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। कॉपी दिस डाउन, raise your hand once you're done. Waiting for Amna and Anisha. बाकी लोग तो हो गए क्या? Guys have raised your hand already. मरीम लोहानी को दीपक चाहते हैं क्या सबको? Everyone is done. Next देखिएगा applications of Henry's law. Now
applications of Henry's law, it is also important. यहाँ से भी सवाल आ जाता है ना, applications of Henry's law. बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। तो पहला एप्लीकेशन है उसको आप साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्लीज राइट टू इंक्रीज the solubility of CO2, the solubility of CO2 in soft drinks, and soda water, the bottles are sealed under high pressure, ठीक है ना? आई होप दिस मेक्स सेंस। इस पॉइंट पे लिख लीजिए, रेज योर हैंड वंस यू राइटिंग, वंस यू डन राइटिंग दिस पॉइंट। देन यू गाइस विल नेक्स्ट रन योर माइक, माइक करेंगे तो नेक्स्ट दो जो एप्लीकेशन है तो समझना जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोस टू द नेक्स्ट वंस। Is anyone still writing? I think no one is writing, है ना, सबका हो गया। आमना, are you writing? चलिए ठीक, चलिए चलो। तो आप लोग को लिखना नहीं है, बिल्कुल पेन वगैरह छोड़ दीजिएगा, है ना, पेन वैन छोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास है सिर्फ सी, तो ये सी लेवल हो गया, दिस इज सी लेवल, है ना, और ये आपके पास है दिस इज माउंटेन। नाउ लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, हम उस पे ए पॉइंट मान देते हैं, दिस इज एट सी लेवल एंड दिस पॉइंट बी, दिस इज ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, ठीक है। आपसे सवाल है प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? स्टार्टिंग विद फटीग है, फटीग तो नहीं जोड़ती है, फटीग तो मान रखता है। मरियम बतून, आप बताएं व्हाट डू यू थिंक, वेयर विल बी, वेयर विल यू फील मोर प्रेशर, या फिर ये बताइए वेयर विल बी मोर प्रेशर, प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होगा, फील नहीं छोड़िए। व्हाट डू यू थिंक मरियम बताओ, प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होना चाहिए, ए में या बी में? जो भी आंसर भी सही गलत नहीं है इसमें, बताइए आप, बिकॉज यू वांट टू डिस्कस इट ना, क्या फील बी होगा में। आपको? बी में। आमना, व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे ज्यादा होगा? आमना, यस सर। आमना, नो सर, क्या ए में। बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए आमना। बी। इंशा, इंशा, बी। इंशा व्हाट डू यू थिंक? बी में। मरियम लुहानी, आप बताइए, मरियम लुहानी, व्हाट डू यू सर थिंक, बी। प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होगा? बी में ज्यादा होगा, चलिए बी। ठीक है, देखते हैं इस बात को। अच्छा प्रेशर हाँ ठीक है, प्रेशर होगा किस चीज का वैसे? हम्म, क्या ख्याल है भाई? This is water. This is water, right? वाटर के ऊपर है, आप वाटर के अंदर नहीं है, ठीक है इंशा। अच्छा अच्छा, okay. सी लेवल पे है आप, है ना, सी लेवल पे, फिर वो माउंटेन है, वाटर के ऊपर है आप, सर वो डेप्थ में ठीक है। नहीं है, वो ए पे। नहीं डेप्थ में नहीं है वाटर, मतलब सी लेवल पे है बिल्कुल, आप बीच पे मान लो, ठीक है, ओ तब तो आप बी बीच है। पे बिल्कुल तब तो भी है, ठीक है। प्रेशर होगा किस चीज का, एग्जाम का, किसका प्रेशर होगा, बताओ। Air. हाँ वेरी, एटमॉस्फेयर, है ना, सही है। अब बताइए
एटमॉस्फेयर ज्यादा कहाँ पे होगा, आप ये समझिए जरा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये फील आती है बच्चों को जनरली कि माउंटेन में ही ज्यादा होना चाहिए प्रेशर, है ना, मतलब उसको भाई घबराहट वाली फीलिंग, प्रेशर ज्यादा, ऐसा पता नहीं क्यों सोचते हैं। लेकिन अगर आप समझिए इस बात को, ऑल दी प्रेशर इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। तो सी लेवल पे आपको इतना एनवायरमेंट मिल रहा है, अब बताइए कहाँ पे ज्यादा एनवायरमेंट मिल रहा है आपको, वेयर देयर इज मोर एयर। when you are at sea level you will be experiencing much more atmosphere, यानी एटमॉस्फेयर मतलब क्योंकि एयर पार्टिकल्स है। और जो आपके पास माउंटेन है, माउंटेन में तो बहुत कम होगा ना ये, एटमॉस्फेयर ही बहुत कम होगा। Like this is the extra atmosphere that you are going to feel. This is the extra atmosphere that you are going to feel in the sea level. This is the extra atmosphere you are going to feel. So that is why we can see अब that फिर नहीं करेगा। pressure at sea level will be greater than pressure at mountain. Make sense है सुनो, ये बताइए आप। ये मत बोल दीजिएगा कि सर ज्यादा होती है लेकिन वहां पे तो हवा ज्यादा चलती है सर वहां पे, बट लॉजिकली आप समझिए इफ यू आर अबव, दिन जितनी चीजें, जितना भी एयर नीचे था वो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग प्रेशर कुछ लेस प्रेशर एक्सपीरियंस करते होंगे बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग लेस अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। डज दिस मेक सेंस, यस और नो? आमना इंचा फरीदा मरीम बतूल एंड मरीम लोहानी, Yes, sir. तो कब एक्सप्लेन सबको अगेन? समझ में आया? ठीक है, अब माइक ऑन रखिएगा। प्रेशर किसका प्रेशर फील हो रहा है मरीम? माइक ऑन रखिए ना, माइक ऑन रखिए जी ठीक। प्रेशर फील यस किसका हो रहा है? एटमॉस्फेयर का। यस सर। एटमॉस्फेयर एडिट से हैं आप? एयर, वेरी फाइन मरियम। हाँ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको ज्यादा कहाँ पे, आप समझिए अगर ये पूरा एटमॉस्फेयर इतना है, हालांकि ये पूरा एटमॉस्फेयर इतना है, ठीक है, ठीक है, तो सी लेवल तो यस यहाँ सर। पे है और माउंटेन यहाँ पे है। तो सी लेवल को अगर आप देखो तो इतना एटमॉस्फेयर एक्स्ट्रा फील होगा आपको, माउंटेन को तो बस इतना एटमॉस्फेयर फील होगा, यस है सर। ना, और सी लेवल पे इतना होगा। ठीक है, तो सी लेवल पे ज्यादा होगा, मेक सेंस है सब? यस सर इट इज। ठीक है, बस यही समझ समझानी थी कि पी प्रेशर एट, ये बनाना नहीं, फोटो का मत बनाने लग जाएगा, ठीक है ना? तो क्या समझाना था आपको? प्रेशर एट सी लेवल इज ग्रेटर देन प्रेशर एट माउंटेन, यानी कि माउंटेन पे क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, दैट इज द सेकंड पॉइंट। अब हम लिखते जाएंगे, आप इसको लिखते जाइएगा, समझ में आता जाएगा, ठीक है ना? इन हाइयर ऑल्टीट्यूड्स लिखते जाइए बिल्कुल, इन हाइयर ऑल्टीट्यूड्स as the pressure is low, altitude मतलब ऊंचाई ना, as the pressure is low, as the pressure is low, solubility of oxygen, solubility of oxygen decreases, which leads to low concentration of oxygen in blood, of oxygen in blood। अरे सर ये कहाँ से आ गया सर, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? I guess solubility of oxygen decreases ना, why? Because oxygen is a gas और blood is a liquid। तो जो ऑक्सीजन का solubility है वो डिक्रीज हो जाएगा, why? Because जितना प्रेशर सी लेवल पे जनरली लोग फील करते हैं, है ना, यूर एट सी लेवल, पूरे जिंदगी आप सी लेवल पे रह रहे हैं एंड यू वेंट टू माउंटेन, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली द लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज, ठीक है? तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड causing causing dizziness and anoxia, and anoxia. This condition is known as anoxia or altitude sickness. Or altitude sickness.
Raise your hand if you're done writing. Waiting for Amna and Mariam Batul. एक काम करते हैं आज के लिए इतने पे रुकते हैं हम लोग है ना we will continue this discussion on Wednesday. अच्छा एक ना आप लोग बस कहीं पे ना रिमार्क्स लिख लीजिए फिर डालिएगा लिमिटेशन ऑफ कंट्रीज लॉ Just give me a second. This is the limitation of countries law. ठीक है तो सबसे पहले जो है इसमें लिमिटेशन है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मॉडरेट टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया तब जाके ये एप्लीकेबल नहीं होगा सिमिलरली इट इज आल्सो एप्लीकेबल ओनली एट मॉडरेट प्रेशर ठीक है ओनली एप्लीकेबल लिख लीजिएगा ओनली एप्लीकेबल एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर सेकंड पॉइंट लिखिएगा only applicable for less soluble gases. क्योंकि escaping tendency यानी कि गैस की होनी चाहिए if a gas does not escape जल्दी तो फिर वहां पे इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा इसी वजह से नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉट एप्लीकेबल फॉर gases that can react with solvent इसी तरीके से not applicable for gases that can associate or dissociate in solvent है तो जैसे आपके पास कुछ गैसेस हैं ना तो उनके एप्लीकेबल नहीं होता फॉर एग्जांपल आपके पास है गैस एक HCl ठीक है HCl पे एप्लीकेबल नहीं होगा HCl पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा बिकॉज HCl क्या करेगा रिएक्ट कर जाएगा H+ Cl नेगेटिव दे देगा ठीक है डिसोसिएट कर जाएगा सिमिलरली अमोनिया NH3 भी क्या कर जाएगा एसोसिएट कर जाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है तो इस तरह के गैसेस पे वो क्या होता है एप्लीकेबल नहीं होता है चेक कर दीजिए बाकी में आपके पास उसी तरह से H2SO4 भी गैस उसमें भी एप्लीकेबल नहीं होता है बिकॉज H2SO4 एसिडिक लेवल दिखाई देगा ठीक है raise your hand once you're done